Good evening, ladies and gentlemen. Every single face on this panel is very well known. They manage tons and tons of public money as also an equal amount of their own money. All of us have analyzed the budget in great detail. Now, let us look at how it will impact our finances. I'll start with you, Maneesh. Manish is a cyclical investor, looks at all the things globally, and then decides where to put in money. With this Trump tantrum now sort of being over, Manish, do you think the globe is now less volatile? Does it offer better opportunities in the coming 6 months? And if yes, does India fall on your map? Two things, I'm not sure the Trump tantrum is over. I mean, until he's around for next 4 years, these tantrums will be sort of pretty frequent. I kind of think that one way to look at sort of Trump reflects is that he is out there to negotiate a small deal with Canada, Mexico, or Europe, and eventually India and China. And of course, make a small victory and then, of course, go back to his audience, the MAGA crowd, and have them cheer it. So that's one benign way of looking at it. There is a high chance that this is how Trump would trade would play out. But there is a decent probability that this time Trump is thinking a lot more geostrategically, and having figured that US would lose its hegemony if something dramatic is not done. And I don't think market, both Wall Street and Dalal Street is prepared for it. So the first order thinking of mine is that it shouldn't be dismissed as Trump wanting to do a small deal. It's possible that we will have a recurrence of what he tried to do with Mexico and Canada to many other countries. That's first order. And a small point, with respect to its impact on India, it's not a direct impact on India that it's very, very unlikely that we'll have major tariffs coming our way. I think the chemistry between Modi and Trump is sort of well known, but it is likely that via China, if Trump were to sort of impose significant tariffs as he did on China, 10%, via that, there's going to be a deflationary pressure on all sorts of manufacturing goods, that China produces. So therefore, if you are in the business of anything that China, that competes with China, I think, next 1.5 years could be sort of problematic for you, because a lot of stuff that you sell likely would be sort of available cheaper. It has implications that we should discuss in detail. But I think from an Indian standpoint, it's via the medium of China that we'll face deflationary pressures, particularly in manufacturing, and that too particularly in the areas that China is sort of good at. So that's how I think Trump's reflex will play out for us. केडिया साहब बहुत जाने माने चेहरे हैं स्टॉक मार्केट्स के, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से निवेश भी करते हैं. पिछले 3-4 महीने से बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई ख़रीदारी नहीं करी और इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छा मौका आए. केडिया साहब, अच्छा मौका आ गया या अभी टाइम लगेगा? नहीं, मेरे को लगता है पिक्चर अभी बाकी है. तो अच्छा मौका आने वाली पिक्चर अभी लग रहा है मेरे को थोड़ा बाकी है. और कई महीनों से नहीं कि मेरे तो ऐसा ही है, जैसे अभी मैंने डांगी सर को भी बता रहा था कि मैं तो साल में मुश्किल से कोई एक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, या 2 साल में 3 साल में 1-2 इन्वेस्टमेंट करता हूँ, और मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता भी नहीं हूँ. और मेरे पास में पैसे भी नहीं रहते हैं, क्योंकि जब तक कोई शेयर्स बेचूंगा नहीं तब तक कोई दूसरा खरीदने का मेरे को मौका भी नहीं मिलेगा. तो मेरे लिए पूरा लॉन्ग टर्म गेम है ये. मेरा क्वार्टर या मेरा दिन शुरुआत होता है 5 साल के बाद में, फर्स्ट डे मेरा इन्वेस्ट करने के बाद में. उसके बाद में फिर गिनती शुरू होती है. तो मेरे लिए इस सब बजट का या ये गड़बड़ का या ये सब चीज़ों का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है. Dhirendra, you've read the fine print of the budget in a manner that not many people go through, and you have basically all details with yourself as far as the benefits of this budget are concerned. At this point of time, we are also focused with a lot of volatility in the market. People who've entered stocks in the last 3.5 years are in pain. What would be your 3 points of advice to what they should do with their existing investing, and what should they do over the next 6 months? All existing investors who are sitting on losses, and they just have to take the lesson. And the simplest thing for any new investor,
anybody who has been investing for many years and last 6 months also he has invested, I don't think they need any guidance. They know that market is like this only, and it will remain like this forever. Just because you started investing does not, change the behavior of the market. What will happen is that, the only thing that can be done about a person who got started is that, he should take a lesson. And the lessons are pretty straightforward. Stagger your investment when getting started. If you don't have much time, keep that money in your bank or whatever. Unless you have 5 years time, don't invest in equity. Never invest at one go. If somebody follows this rule, I don't think he will ever be disappointed. Okay. And for all those people who had bought, 3 different kinds of small cap funds, 4 mid cap funds, and a lot of other aggressive thematic funds, what is your advice? No, just hold it and set it. And if you have a bunch of, I have this great belief. I've been looking at mutual fund for the last 30 years. And if you invest regularly in a mutual fund, and even the lousy ones, even a bad fund manager can't really do any damage to you. Because in 5-7 years, things really work out very nicely. And the market is always cyclical. So my suggestion is that, if you are invested, and small cap fund, if you are able to withstand the default, there is nothing more rewarding. The longest 20-year return of a dozen small cap fund is close to 20%. So 20% you can really understand what, at this kind of return made over last 20 years in a public mutual fund, which is just investing in small companies, it is twice as much as what Mr. Buffett has made. Wonderful. So if you are stuck in any small cap fund where the net asset value is far lower than what your entry level was, just stay there. It will be better if you put in a SIP into that amount, whatever it be, and then maybe wait for 5-6 years. In fact, earlier, the tide will turn. Maneesh, in terms of the investment opportunities available in India, vis-a-vis China, as you say, China will be in pain. What are the 4 or 5 sectors that you will avoid completely, where the competition from China is so good that it's impossible for Indian companies, listed Indian companies, to make money? So I think, thing which sort of Indians like the most, of course, a lot of managers like is, let's say, auto and auto components. Traditionally, India has been sort of pretty good at that. But once you see Chinese cars and the price point they offer, and what they've done to the East Asians, some of the countries, if you go to Thailand, Malaysia, how Chinese manufacturers have formed that space. So my sense is that at some point in time, it'll begin to hurt Indian manufacturers. So I think auto comp is what I'll be super cautious on. I think it's also likely that metals, especially the high-end metals, would face tremendous stress unless, of course, we impose substantial amount of anti-dumping duty. So, and it's sort of, China is about 1/4 of global manufacturing. So China is sort of good at anything which is tradable. And is of a size which is unimaginable, from an Indian manufacturer standpoint. So my sense is that almost all manufacturing goods which are not in core sectors, would potentially will get hurt. The other side of it, even though you didn't ask me, the other side of it, the service business is where the Indian moat is. Anything to do with the, India sort of has a high amount of cognitive labor, and adjacent to that is, of course, Indian IT or Indian tech ecosystem, not just the listed players, but also the SaaS and the, potentially AS, the air, all sorts of those businesses, would perhaps do very, very well. So in a sense, it's a glass half full. There are opportunities in India that, in the new regime that we live in, very likely, as a manager or as investor or as someone, who wants to sort of invest in newer opportunities, including the unlisted ones, I think there are a lot of opportunity in India today, which we have in the new regime that we are in. So we avoid autos, we avoid, therefore, auto ancillaries. Metals is something that you don't like. Yeah. And therefore, what you like is maybe the Services IT business. space
the banking space, these are all services. Yes, yes. These So are all bank- domestic oriented. I I mean, agree. apart from IT, which is. I agree. So, so small players like, NBFCs have had a peak pain, and likely regulatory loosening up will happen. At margin, what do you call, liquidity will ease. So therefore, the peak pain for the NBFCs, including microfinance, is likely behind us. Okay. I think BFSI in aggregate, outside of asset management firms, I like, because valuations have gotten down corrected, and sort of improved liquidity and better valuation should mean that they should keep you in good stead. So that part. What I'm most bullish, of course, is I've discussed on your show many times in the last 6 months, is the IT and IT services. I think that part will do very well for India. Dhirendra, you wanted to add something? I can only think of the pain points. The biggest lesson to take from what has happened in the last 6 months is don't get excited about exotic part of the market. The PSU fund, that fund, this fund, the defense fund. Investing is boring. Investing should be done with great simplicity, should be done in a manner where diversified equity fund, the flexi-cap fund, the multi-cap fund, they take you home. And everything else which look like a novelty is where investors have the maximum pain. केडिया साहब, आप चाइना गए और आपने वहाँ पर बहुत समय बिताया. मनीष जी ने कहा कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो इतनी बड़ी है कि वो शायद हमें ओवरवेल्म कर दे. एज एन इन्वेस्टर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है चाइना वर्सेस इंडिया? मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें चाइना से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. ये अपने आप को, आई डोंट नो हम क्यों चाइना से कंपैरिजन करते हैं. हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है. और कई डेटा ये अगर आप ठीक से अगर इसको सर्च अगर आप करेंगे तो आपको खुद को आपको एहसास होगा. एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे हमारा एजुकेशन का जो स्पेंडिंग है वो $12 बिलियन का है, और चाइना $800 बिलियन साल का खर्चा करता है एजुकेशन के अंदर में. तो चाइना का और हमारा किसी भी तरीके से अगर समझे तो कोई मुकाबला नहीं. जैसे हमने गाड़ी की बात बताई, लोग पूरी दुनिया में BYD का नाम खाली जानते हैं. BYD चाइना की 5th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी, 5th लार्जेस्ट, नंबर 1 नहीं है. और जहाँ तक कार का सवाल है, मनीष जी जैसे बता रहे थे, 60 लाख गाड़ी इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल चाइना एक्सपोर्ट करेगा, 60 लाख. और उसकी एवरेज कॉस्ट उसकी आती है $18,000. और यूरोप में वही गाड़ी बनती है $40,000 के अंदर में. तो ये जो अभी ट्रम्प का भी जो ये बातचीत जो आई है अभी है कि मेरे को सोलार में नहीं जाने का, दूसरी एनर्जी में नहीं जाने का, इलेक्ट्रिक में नहीं जाने का, वो खाली इसके लिए. आज दुनिया के आप देखिए जितने भी भंडार है, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, वो चाहे सोलार की हो या आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो, लिथियम आयरन बैटरी जिसके बाद वो करते हो, इवन ग्रीन हाइड्रोजन हो, इन सबके जो रॉ मटेरियल है, इंडिया भी चाइना पर डिपेंडेंट है इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए. तो उनके साथ हमारा वैसे अगर वस्तुतः देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है. तो लेकिन केडिया साहब, दिक्कत तो ये है ना कि जब हम बाज़ार में निवेश करते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता. अब हमको भारतीय बाज़ार में ही इन्वेस्ट करना है. आप जैसे बड़े दिग्गज चाइना में भी इन्वेस्ट करते हैं. यहाँ पर जैसा कि मैंने मनीष से पूछा, आप कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, जहाँ पे आपको पता है कि चाइना की कॉम्पिटिटिव एज इतनी ज़्यादा है कि इनमें मल्टी बैगर्स ढूंढना या इनमें 15-20% सालाना रिटर्न कमाना मुश्किल है? कौन से अच्छे सेक्टर है ऐसा बोलो? कौन से आप बिल्कुल देखते ही नहीं है जहाँ पर ये दिक्कत है? नहीं, जहाँ पर चाइना से कंपटीशन अगर समझिए कोई एक्सपोर्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कई जगह है, जैसे 3 व्हीलर का एक्सपोर्ट होता है. तो आज ही संयोग से किसी से बात हो रही थी, अफ्रीका के अंदर उसको 3 व्हीलर चाहिए, उसको इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर. तो मेरे को पूछ रहा था क्या रेट में जनरली आएगा, तो मैंने बताया करीब $6,000 के अंदर में. वो बोला मेरे को चाइना से $3,000 में मिल रहा है. तो मैं बोला मेरे को बात करने का भी कुछ रह नहीं गया. बोले तुम्हें चाइना से ले लो, मैं इसके अंदर में क्या कर सकता हूँ. तो जहाँ पर चाइना है ना, वहाँ पर आप उसको सक नहीं पाएंगे कोई भी कारण से, चाहे वो उसको स्टेट उसको सब्सिडी देता हो, कि वहाँ पर लेबर कॉस्ट वहाँ पर कमती हो, कि रॉ मटेरियल उनके खुद के हो. जहाँ पर चाइना के साथ कंपटीशन हमको करने की ज़रूरत नहीं है ना, हमको मेरे को नहीं. तो हम दूसरी चीज़ तो बेटर है कि जो डोमेस्टिक जो थ्योरी है, जो थीम है डोमेस्टिक थीम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बजट के अंदर में और फोकस उधर करना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस हो, वहाँ पर इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए. जैसे पिछले जो 4-5 साल गए उसमें गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस था,
रेलवेज और डिफेंस के ऊपर में फोकस आया, तो ये सारे शेयर्स मल्टीप्लाई हुए वैसे। अभी जैसे गवर्नमेंट बात करिए फॉर एग्जांपल टूरिज्म की, तो ऐसे लगता है टूरिज्म के जो शेयर्स हैं उसके अंदर में कुछ आना चाहिए। इंडिया के अंदर में पूरी दुनिया का सारा टूरिज्म इंडिया के अंदर में समाया हुआ है, चाहे आपको इबिजा की बीच चाहिए तो चाहिए, रेगिस्तान चाहिए तो स्नो चाहिए, तो और पुराने अगर समझिए वो पैलेस चाहिए, सब चीज़ इंडिया में है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है टूरिज्म है जो हो सकता है कि राइजिंग सेक्टर। आपने कोई लिया टूरिज्म का शेयर? नहीं, मैंने एक एयरलाइंस का शेयर्स लिया था 2 साल पहले, एयरलाइंस कंपनी, एक एयरलाइंस कंपनी का शेयर्स लिया, वो होल्ड कर रखा हूँ मैं, कभी मौका पड़ेगा तो उसको और बढ़ा सकता हूँ मैं। तो वैसे तो हमारे देश में एक ही एयरलाइन है जिसमें हम सब लोग ट्रैवल करते हैं और वो ही लिस्टेड है, तो उसका नाम लेना क्या है वो तो सब आपको पता ही होगा। धीरेन्द्र, द क्वेश्चन कम्स टू यू ऑन चाइना। After all that we've spoken, the net dollar return that foreign investors have earned on China is much, much less than India. It's zero over the last 5 years for the option that is available. Wonderful. So with that background in mind, do you also construct portfolios which are minus China? No, there are not too many ways of building portfolio where you can actually add China. You don't have too many investment vehicles. All that you have is, Hong Kong index getting factored in. But that apart, I would be very wary. In fact, there was one index. There is an index called FANG Plus. It has 10 big technology stocks of the world in it. They are very large position, 10% each. It gets rebalanced every 6 months. And two Chinese companies were part of it about 2 years back. And that was a nightmare because that was the beginning of the fall of that Alibaba and Baidu, which were the biggest component of this. They had to remove them. And that led to the drag of that index by 50%. And these two companies lost their value. So one is to actually look at Chinese companies as great businesses, great margin, great market share. But as an alternative or as an investment avenue, they are horrible. They are nightmare for investors because the basic belief that businesses can work, or for the investor centricity, the way we are able to put people in jail for their corporate misgovernance in India, that I think is far away in China. Okay. Maneesh, given the fact that the rupee is on a constantly declining trend over the last 3-4 months or so, where do you expect it to settle? And obviously, two benefits from rupee depreciation, any sectors that you find interesting? So the first order thinking on rupee, of course, is that purely from a way we all, and including RBI measures, is real. I think we are sort of close to a decent valuation now. Last time also we discussed, close to 87, 88 is what I thought it'll get to. We're already there. Now, of course, it is a dynamic situation. If tomorrow there were to be more sanctions on China or more tariffs in China, it's, as I said, the route to if there were to be more tariffs, eventually it would mean sort of more depreciation for INR. INR will have to depreciate significantly more than CNY because China would be otherwise dumping their goods here. So to that extent, it's possible that versus what I would have thought 3 months ago when I talked to you that 87 is where I see it, it's a little bit more open-ended now. That's one. Okay. Number two, of course, rupee typically depreciated rupee typically helps things that we sell abroad and which are sort of billed in dollar. Something that billed in dollar is actually IT. So again, it benefits. It's a good, gold, IT, all of these are sort of effectively billed in dollar. So therefore, actually, they do benefit. Metals also are effectively billed in dollar because there is a import parity, and to that extent, it should benefit. But because it also has an angle of Chinese economy not doing well, therefore it's avoidable, so to say. So to that extent, I would say, precious metals and IT services is one way to kind of bet on sort of weaker currency. So Indian sort of index is actually a beautifully constructed index. In all kinds of situations, financial distress, rupee depreciation. You're talking about the Nifty. Indian Nifty is a very nicely constructed place with a lot of global sort of play built in through USD INR. And some of it actually through exports. So to that extent, it's a safe place to be. Even in distress, it actually in 2013 or 18, the Nifty does all right. So sometimes, you see pain in small cap because they're in intermediate sector. So if let's say economy were to slow rapidly,
then small caps and mid caps actually don't do well because they are a very high beta. And their margins actually erode very quickly when the economy slows down. But the Nifty does all right. So to that extent, it's given that you asked this question from all of us, if you also kind of think that there's a lot of uncertainty, at margin you may want to hide in Nifty. That's a sort of a safe place to be in. Okay, Dhirendra would term it as a large cap fund. Yeah, something like that. Yeah. Okay, तो अगर यहाँ पर फ्रेश पैसा डालना हो धीरेन्द्र जी, तो बताइए किस तरीके से डालना है, कौन कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि अगले 2-3 साल बढ़िया काम करेंगे और किस तरीके से निवेश करें, एक मुश्त या धीरे धीरे, और कौन कौन से फंड्स, अगर आप ओवरऑल थीम्स ही बता दें तो। नहीं, मुझे थीम के बारे में जानकारी नहीं है और मैं बहुत विश्वास करता हूँ डाइवर्सिफिकेशन में, और कुछ थीम है जो कि काम करेगा, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कैसे करें और उसमें इन्वेस्ट कैसे करें और स्पेसिफिक टाइमिंग क्या होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्मॉल कैप का हवा बना हुआ है, हमारे यहाँ एक गड़बड़ी हुई है। हमारे यहाँ ना एक सेबी ने क्लासिफिकेशन बनाया कि 100 बड़ी कंपनी लार्ज कैप है, अगली 200 कंपनी मिड कैप है और बाकी सारी कंपनियाँ स्मॉल कैप है। तो अगर छोटी कंपनी अगर बहुत बड़ी भी हो जाती है, लिक्विड भी हो जाती है, अगर उसमें ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ जाता है, हमारे बाज़ार काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है, तो बहुत सारे बड़े मिड कैप लार्ज कैप जैसे हो गए हैं, लेकिन वो मिड कैप ही माने जाएंगे। स्मॉल कैप अलग तरीके का, जो स्मॉल कैप की लिस्ट में पहले 150-200 कंपनियां हैं, वो करीब करीब बड़ी मिड कैप जैसी लगती हैं। तो उससे डरने के बजाय पिछले 20 साल का वो स्मॉल कैप का डेटा देखिए कि जो नियरेस्ट डाइवर्सिफाइड व्हीकल है उससे वो ज़्यादा रिटर्न दे पाया है। और ये जो सारे उतार चढ़ाव की जो हम बात करते हैं, ये बिल्कुल गिरता है। 2008 में जब बाजार गिरा था तो यहाँ 55% की गिरावट थी, लेकिन उसके बावजूद ये जो 20% का सालाना रिटर्न है, ये देखिए कि आपको 10% रखना है, 20% रखना है, 25% रखना है। बाकी सब चीज़ों के लिए एक मल्टी कैप फंड जिसमें कि स्मॉल, मिड, लार्ज सब कुछ होगा। फ्लेक्सी कैप ना खरीदे क्योंकि वो अधिकतर फंड लार्ज कैप हो गए हैं। 1 या 2 फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ये एक अच्छा मौका है। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा इकट्ठा हो भी गया है तो अगले 3 महीने में उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। तो कितना प्रतिशत मल्टी कैप फंड में डालें, कितना स्मॉल कैप में, कितना मिड कैप में? अगर आपने पहले कभी कुछ नहीं किया है तो 100% पैसा अपना मल्टी कैप फंड में डालिए। अगर आप 2-3 साल से इन्वेस्ट करते हैं तो 10-20%, 30% स्मॉल कैप में भी डालिए। जी, केडिया साहब, आप बाज़ार को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और अक्सर बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं क्योंकि आपके हिसाब का निवेश का मौका नहीं मिलता है। एक तो आप क्वांटिटी बहुत खरीदते हैं और उसको लंबे अरसे तक देखते हैं। फ़िलहाल कोई ऐसे स्टॉक्स, ऐसे सेक्टर्स या ऐसे सेगमेंट्स बाज़ार के जो आपके वैल्यूएशन मैप में आते हुए दिख रहे हों गिरावट की वजह से? तो जैसे मैंने बताया, मेरे को टूरिज़्म पे लग रहा है कि इंडिया के अंदर में टूरिज़्म का एक जो सेक्टर है वो सनराइज सेक्टर शायद वो हो सकता है अगले 10-15 सालों के लिए। और उसी तरह मेरे को वो एयरलाइंस भी उसकी प्रॉक्सी है, या समझिए, या टूरिज़्म एयरलाइंस की प्रॉक्सी, आप कुछ भी समझिए। तो मेरे को जैसे एयरलाइन के अंदर में जैसे मेरे को लग रहा है कि ये सनराइज सेक्टर है और इनमें अभी ये शुरुआत हो रही है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी अगर आप देखें, एक डेटा आपको बताता हूँ। जैसे मैं एक जगह मैंने पढ़ा था कि इंडिया में 150 एयरपोर्ट है, तो उसने पूछा कि यूएस के अंदर में 14,000 एयरपोर्ट है, 14,000 एयरपोर्ट है, ठीक है, वो छोटे बड़े प्राइवेट सब मिला के। और इंडिया के अंदर में आज भी क्या हो रहा है कि एक साल में एयरलाइंस पे जितने यात्री ट्रैवल करते हैं उतने रेलवे में एक दिन के अंदर में ट्रैवल करते हैं। तो मैंने स्कोप यहाँ पर खूब बहुत ज़्यादा है, तो मेरा फोकस अभी इन पर है। और हमेशा की तरह केडिया साहब, जो शो की समाप्ति होगी वो आपके गान से होगी। बताइए कौन सा ऐसा गाना है जो सूट करता है बाज़ार के टेम्परामेंट को और आपकी सोच को? नहीं, मेरे को अभी जो मार्केट का जो ढंग, हम हमेशा चिंता में रहते हैं ना, बुल मार्केट है, बेयर मार्केट है, ये हो गया, वो हो गया, फॉरेक्स हो गया, कभी बारिश, कभी हो गया। इस पर मैंने एक पहला गाना लिखा था कि कभी DI, कभी FI, इन्फ्लेशन, कभी तेल, कभी डॉलर, कभी बारिश, इन सब का है ये खेल। प्रॉब्लम्स के है कई नाम यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, शॉर्ट टर्म में मेरी जान। और इसका दूसरा अंतरा ये है, कभी मैक्रो, कभी माइक्रो, कभी स्लो डाउन, कभी स्केल, कभी US, कभी चाइना, कभी झगड़ा, कभी मेल। टेंशन के है कई नाम यहाँ, ज़रा हटके ज़रा बच के, शॉर्ट टर्म में मेरी जान। ए दिल है सिंपल कमाना यहाँ, ज़रा इफ़ लॉन्ग टर्म, बस लॉन्ग टर्म, ओनली लॉन्ग टर्म मेरी जान। क्या बात।
With that, ladies and gentlemen, we'll call it a day. So the theme is multi-caps, the theme is tourism and airlines, and of course, the IT trade. Thank you so much for watching. Thank you so much, Dhirendra, Vijay, and also Maneesh for that exciting conversation, and Vijay especially for talking about and in that musical words, what exactly is the current temperament of the markets. Always a pleasure to hear you out on that. All right. Set of panelists, Amit Malviya, National in Charge of BJP's